Hello students, first confirm whether I am audible to you or not. मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं, जरा कंफर्म कीजिए प्लीज, कमेंट कीजिए। Hello students, welcome to Eduins, your only trusted online education platform. आज हम यहाँ पे CBSE क्लास 10 का पहला मैथ्स क्लास करेंगे लाइव में। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। Students, please join so that we can start our class accordingly. Okay, so without wasting our time, we just start our class. So today what we will do, we will solve some MCQ problems based on the paper 2024, previous year's questions, okay? So let's check out what is our first problem. If you need any assistance, अगर कोई भी जरूरत हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी queries हो, आप हमको इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है। प्लीज गो टू आवर वेबसाइट एंड चेक आवर एक्टिविटीज। एंड 1 जनवरी से हमारा क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। CBSE का हमारा जो पहला इनॉग्रेल प्रोग्राम था वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आज हमारा पहला मैथ्स क्लास है CBSE का। So I will look forward to your active participation। और आपके जितने सारे दोस्त हैं, कोई भी नेबर है, कोई भी जान पहचान वाले हैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा शेयर करना ताकि उन लोगों तक ये खबर पहुंच सके कि हम लोग CBSE में भी अब आ गए हैं। Okay, so today's first problem. The pair of कैसा होता है, देखिए आपका जो सेक्शन ए होता है उसमें 20 MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं, 20 MCQs होते हैं। उसमें सारे जो आपके जो पूरे का पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाता है, ठीक है। तो वो जो सेक्शन ए है जिसमें MCQs है वो पार्ट आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2024 का पेपर है ये, ठीक है। Okay, so our first problem today is the pair of linear equations this and this has number 1 unique solution, exactly 2 solutions, infinitely many solutions and no solutions. आपको पता होगा हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो रूल्स थे, सपोज a1x b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। अगर ये दोनों हमारा दो मतलब वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो हमको यहां से क्या मिलता है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 अगर होता है, if this happens then these pair of linear equations have exactly one unique solution। अगर ना हुआ तो इसका कोई solution नहीं होता है। तो this is our on pair of linear equations। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा दो इक्वेशन है, जैसे कि x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा है -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई a1, a2, b1, b2 and c1, c2 फ्रॉम दीज टू गिवन इक्वेशंस। यहां से अगर a1 को अगर हम आइडेंटिफाई करें
तो देखिए A1 है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम यहाँ पे 1 सपोज कर सकते हैं, तो ये है 1, B1 हो गया हमारा 2 और C1 हो गया 5। और यहां से अगर हम देखें A2 हो गया -3, B2 हो गया -6 और C2 हो गया 1। ठीक है, तो यहां से we first identified our coefficients A1, B1, C1 and A2, B2, C2. Now just calculate this. What is our A1 by A2? A1 by A2 will be 1 by -3, that is -1 by 3. B1 by B2 वो क्या होगा? वो होगा 2 divided by -6, that is -1 by 3. और C1 by C2 वो क्या होगा? वो हो गया 5 divided by 1, that is 5. इसका मतलब हमारा यहां से हमको क्या मिला? देखिए A1 by A2 is equals to B1 by B2. These two are same but not C1 by C2. Okay, so this is not equal to. इसीलिए we can conclude that we don't have unique solution, that is no solutions. हमारा यहाँ पे कंक्लूजन रहेगा कि यहाँ पे क्योंकि ये C1 by C2 ये इक्वल नहीं हुआ, इसलिए no solution will be there. ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. Please comment me if you have any doubt, any problems, any problem or any doubt regarding any question that is discussed over here. Okay, so हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं. देखिए, the common difference of the AP. Now here we are given an AP. This is the AP. Okay, this is the AP which we are given. We need to find out the common difference of the AP. 1 by 2x first term, 1 minus 4x by 2x, this is the second term, 1 minus 8x by 2x, this is the third term of our AP, right? Now we need to find out the common difference. If we have an AP consisting the terms A1, A2, A3 and so on, what we get? We get the common difference D as A2 minus A1, A3 minus A2 and so on, A4 minus A3 and so on. So here what we will do, यहाँ से हमको D निकालना पड़ेगा पहले. We will calculate D from the second and the first term. That is, यहाँ पे अगर ये A2 ले लिया, ये A1 ले लिया, A3 ले लिया और so on. So here A2 minus A1 will be 1 minus 4x by 2x minus 1 by 2x. Now calculate. 2x will be our LCM. 1 minus 4x minus 1 minus 4x by 2x. 2, that is minus 2, right? और A3 minus A2 ये क्या हो जाएगा? This minus this. So 1 minus 8x by 2x minus 1 minus 4x by 2x. Now 2x will be our LCM. 1 minus 8x minus 1 plus 4x. That is also 4x by 2x, 2 minus 2. I hope you understood. Q exhibition. আবার একটা ফোন আসছে, ফোনটা ধরে বলো যে ম্যাম একটু ক্লাস নিচ্ছেন, 4টায় শেষ হবে, তারপর কল করছি.
Okay, I hope you understood. So here, what will be our common difference? That is option B. Option B is the correct answer. Right? Okay. So let's move on. Two dice are thrown together. The probability that they show different number is, what will be the probability that they will show different number when two dice are thrown together? यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले? What we will do? First, we will find out the probability that two dice will show the same number. Okay? दो अलग अलग नंबर अगर दिखाएंगे दो डाइज में, तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज. जैसे कि पहले में एक दिखा सकता है, दूसरे में दो, 1 3 1 4 1 5 1 6. ओके, मतलब अगर एक डाइस में अगर 1 अपीयर कर गया तो दूसरे डाइस में 1 अपीयर नहीं करना चाहिए. ऐसा इवेंट्स कितने सारे होंगे? ऐसा इवेंट्स पहले में ऐसा होगा, दूसरे में अगर पहले में अगर 2 आ जाए तो दूसरे में 1 आ सकता है लेकिन 2 नहीं आ सकता, 2 3 आ सकता है. ऐसे करके बहुत सारे इवेंट्स होंगे. तो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डाइस will show the same number, and we know that the both dice will show different number is just the complementary event of the previous event that is said. That is, अगर ऐसे सोचेंगे कि दोनों डाइस में एक ही सेम नंबर अपीयर करेगा, जैसे कि दोनों में ही 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 and 6. ये जो इवेंट है, this is the complementary event of this. ये तो क्लियर है ना? तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे and then we subtract it from the total probability that is 1, we will get our required answer, right? अगर दो डाइस थ्रो किया गया तो टोटल events will be 6 square, right? एक में 6 आता है, दो डाइस अगर थ्रो करेंगे तो उसमें 36 आएगा, 6 square. तो total number of events will be 36, and that event that, suppose A be the event, let us just इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि both dice will show same numbers. So how many events are there? 1 2 3 4 5 6. There are 6 events. So number of A is 6. So what is the probability of A? Probability of A is number of A divided by number of total events. That is 6 by 36. 1 by 6. अब ये 1 by 6 जो probability आया, ये क्या आया? ये आया कि सेम नंबर शो करेगा. अगर डिफरेंट नंबर शो करना है तो we need to find out A complement. So what is the probability of A complement? 1 minus 1 by 6, that is 5 by 6. Hence option B is the correct answer. अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें ना दो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में ऐसा क्वेश्चंस हमेशा आता है कि डिफरेंट नंबर शो करेगा. अगर डिफरेंट नंबर को लेके हम इसका सैंपल स्पेस लिखने बैठेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे थिंग्स, मतलब ऑलमोस्ट 30, देयर विल बी 30 इवेंट जिसको हमको लिखना पड़ेगा ऐसे. तो वी वॉन्ट डू दैट. हम ऐसा नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे कि सेम नंबर आ जाए, ये सब इवेंट्स हम लिख लेंगे पहले, क्योंकि ये नंबर्स में कम होगा, थोड़ा सा कम टाइम में ये वी कैन कंप्लीट दैट राइटिंग, एंड देन वी विल कैलकुलेट एंड देन वी विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ दिस.
ओके, ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, the probability of guessing the correct answer to a certain test question is x by 6 if the probability of guessing the correct answer to this question is 2 by 3, then the value of x is what? If the probability of not guessing the correct answer, पहला है guessing the correct answer, इसका probability दिया है x by 6, not guessing the correct answer, इसका probability दिया हुआ है 2 by 3। अगर ये guessing का situation हम consider करेंगे, suppose we are given an MCQ, we need to guess the answer, इसका क्या क्या possibilities हो सकता है, हम करेक्टली गेस करेंगे या फिर इनकरेक्टली गेस करेंगे, इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता ना। सो देयर आर टू इवेंट्स ओनली व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। जब भी ये एमसीक्यू टाइप का गेसिंग टाइप का क्वेश्चन आए, ऐसा कुछ मतलब कोई कॉन्सेप्ट आए, तो इसमें दो ही इवेंट हो सकते हैं, एक वन इज करेक्ट, अनदर इज नॉट करेक्ट। करेक्ट गेस कर सकते हैं या फिर करेक्टली गेस नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई इवेंट यहाँ पे अपीयर नहीं कर सकता। देयर आर टू इवेंट्स ओनली व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव टू। अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ठीक है, अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो उन दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना। अगर गेस किया, दिस इज, इफ दिस इज कंसिडर्ड एज द इवेंट, देन दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू दिस, और ये दोनों का सम जरूरत में होना चाहिए इज इक्वल्स टू द टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, x by 6 प्लस 2 by 3 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्योंकि एमसीक्यू है, हमको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ जाए, कोई ज्यादा मार्क्स में आ जाए जहां पे हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा कि सिंस दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने की वजह से ये दोनों का सम हो गया 1। अब x plus 4 is equals to 6 and hence this is 1 x plus 4 is equals to 6 and hence x is equals to 2. So what is the value of x? Value of x will be equals to 2. Option A is the correct answer. Okay. Yes, Nazimul Haq. Hi. Option A. Okay, option A. Yes, this is the correct answer. Okay, let's move on. If A is equals to this, if A is equals to this, B is equals to this, and C is equals to this, and LCM of ABC is equals to this, then find the value of X. ये सम करने के पहले हम आपको बोलना चाहते हैं कि हमारे जो माध्यमिक एग्जाम का जो विंग है, वहां पे हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं 5 जनवरी एंड 12 जनवरी, जहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस होगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर होगा। उसी तरीके से एग्जाम में जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, उसी तरीके से कॉपीज भी चेक होंगे।
अगर आपके कोई जान पहचान वाले हैं जो कि मॉक टेस्ट देना चाहता है, माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो माध्यमिक एग्जाम है उसके मॉक टेस्ट कोई देना चाहते हैं, तो प्लीज हमको यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डिटेल सभी लिखा हुआ है, हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दिया हुआ है। यू कैन कॉन्टेक्ट, यू कैन गिव द मॉक टेस्ट ओनली। ओके, यहाँ पे देन लेट्स स्टार्ट आवर प्रॉब्लम। एलसीएम दिया हुआ है कि 3780। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, 3780 को हम फैक्टराइज करेंगे। चलो फैक्टराइज करते हैं। 1690 नहीं 1890 होगा। दिस विल बी 1890। नेक्स्ट 945, यहाँ पे 3 दे सकते हैं। 315, फिर 3 1 3 0 5, अगेन 3 5, फिर आएगा 5 7, और फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस LCM. Now if A is equals to 2 square 3 to the power x, B is equals to 2 square 3 into 5, C is equals to 2 square 3 into 7. Okay. फिर LCM क्या हो जाता है इसका? ABC का LCM हो जाता है 2 square 3 to the power x into 5 into 7, और यहां से हमको क्या मिलता है LCM? 2 स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 2 2 है, 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7। इसका मतलब ये जो है दैट इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि दोनों ही तो LCM है। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7, इसका LCM ABC का LCM ये हो गया, और ABC का LCM जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो हो गया ये, दैट कैन बी रिटन एज दिस। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 7 2 टू द पावर 2, ये तो सेम आ गया। यहाँ पे है 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 क्यूब, सो वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू व्हाट? 3. As the bases are equal, the powers of the quantities are also equal. This is the basic rule of indices. Okay, so our correct answer is option C. Nazimul Haq, yes, your answer is correct. Ma'am, how are you? Yes, I'm fine, Nazimul, thank you so much. Okay, so our next problem. The zeros of the quadratic polynomial, this zeros, how do we find the zeros of any polynomial? First, we need to factorize the polynomial, and then we have to find the values of x for which the polynomial becomes 0. That is the zeros of the polynomials. Okay, now first of all we just factorize this. कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे मिडिल टर्म यूज करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया 18, 3 और 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हमको मिडिल टर्म अगर करना पड़ा तो माइनस करके करना पड़ेगा। जो नंबर्स हमको मिलेगा उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 6x प्लस 3x, अच्छा ठीक है, we will just add another step to it. Minus 6 minus 3x minus 9. 6 minus 3 is equals to हो गया 3, यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस रह जाएगा। Now if we just open the bracket, we'll get
something like this. Take 2x common, x minus 3, 3x minus 3. What we get? 2x plus 3x minus 3. Now to find the zero of the polynomial, what we will have to do? We'll just have to equate these two factors as 0. Now, if these two are the product of these two quantities is 0, individual quantities can be written as 0. So from here, we find x is equals to minus 3 by 2. And from the second one, we have x is equals to 3. So which option here? 3 and minus 3 by 2. So this option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Devashish, good afternoon. How are you, ma'am? I'm fine, Devashish. তুমি কেমন আছো? Okay. So, move on to our next problem. From a point on the ground which is 30 meters away from the foot of a vertical tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degrees. The height of the tower is, what is the height of the tower? Let us calculate. Okay. Can you please give an easy tip to find common difference? कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का इजी टिप क्या देंगे? अगर टर्म्स दिया हुआ है तुम्हारा, इफ द टर्म्स आर गिवन, देन यू विल जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट द लेटर टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, द नेक्स्ट टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म. ओके, मतलब पहले तुमको जैसे कि A1, A2, A3, अगर तीनों टर्म्स तुमको दिया हुआ है, you will just have to find out A2 minus A1 and then A3 minus A2. This will give you the common difference only. और इससे ज्यादा इजी कोई मतलब अब देखो सम का जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा ना, उसका भी टाइप्स होते हैं. तुमको क्या दिया हुआ है, that is important. What information you have in your hand, that is important. अगर टर्म वाइज दिया जाएगा तो माइनस करके निकालना पड़ेगा. अगर ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि nth टर्म दिया गया या फिर नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया या फिर सम दिया गया, तब तो फॉर्मूला यूज करके डी फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो द थिंग्स व्हिच यू आर गिवन, दैट इज इंपॉर्टेंट. I am WBSC, but I will try. Sure, why not? तुम्हारा syllabus almost same ही. You can definitely try. From a point on the ground, suppose कि there is a point on the ground away from the foot of a vertical tower. Now there is a vertical tower. Okay. Angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. यहाँ तक इसका जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन ABC, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. द हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, मतलब AB विल बी व्हाट? ये दिया हुआ है 30. वी नो AB by BC is equals to tan 60 degree. So AB divided by 30 is equals to root over 3. So AB is equals to 30 root over 3. So option B is the correct answer.
30 root 3 is the correct answer. Okay, good. So moving on to our next problem. If cos theta is equals to root 3 by 2 and sin phi is equals to half, then tan theta plus phi is equals to what? देखो, cos theta is given root over 3 by 2. Now what is the value of the angle for which we find cos theta is equals to 3 by 2? What is the value of the angle? Angle 30 degree. For 30 degree, cos is root 3 by 2. Again, sin phi is equals to half. What is the value of the angle for which we find sine as half? That is also 30 degree. Sine 30 degree. Okay. So we find theta is equals to 30 degree and phi is also is equals to 30 degree. Then what we'll have? Theta plus phi is equals to 30 plus 30. That is 60 degree. Tan theta plus phi is equals to tan 60 degree is equals to root 3. So option A is the correct answer. Yes. Root 3 is the correct answer. That is option A. Okay. Those are pretty direct problems. I don't think that you are having any doubts or any problems, but still, if you have, in your comment section. Let us move to our next problem. Okay. So maximum number of common tangents that can be drawn to two circles intersecting at two distinct points. Excuse me. ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের কি আজকে লাইভ ক্লাস টেস্ট পেপার সলিউশন ফর মাধ্যমিক ক্লাস হবে? ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের আজকে তোমাদের লাইভ ক্লাস শিডিউল তোমরা পেয়েছো অলরেডি, তোমরা একটু শিডিউলটা দেখে নিও। আজকে তোমাদের ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস ছিল, মোস্ট প্রবাবলি ক্লাস 10 এর মাধ্যমিক যারা আছো তাদের। ওকে, এটা ইম্পর্টেন্ট, यहाँ पे ये this point is very important, intersecting at two distinct points. No Debashish, this is not the correct answer. Intersecting at two distinct points means the circles will be like this. दो पॉइंट पे ये दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे दो सर्कल्स के कितने सारे टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं? ऐसे सर्कल्स के सिर्फ दो ही कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक इस तरफ से हो सकते हैं और एक यहां से हो सकते हैं, और कोई कॉमन टेंजेंट इन दोनों का नहीं हो सकता। If the circles were not intersecting but only touching, means दो सर्कल्स अगर ऐसे होते कि एक पॉइंट पे सिर्फ टच कर रहे हैं, नो इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे हम तीन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते थे। एक तो यहां से, दूसरा यहां से और तीसरा यहां से। Three common tangents would be there if two circles are only touched each other in a single point, at a single point. But यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे काट के अंदर से जा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे, मतलब ऐसे। If this is the situation, then only two common tangents can be drawn. Okay?
So the correct answer will be 2, not 3. Can't understand the meaning. Debashish, বুঝতে পারলে না? Let me just explain in Bengali. Since we have a Bengali student with us, Bengal board student, we just explain this. দুটো বৃত্ত যখন ইচ আদারকে ভেতর দিয়ে টাচ করছে, মানে ইন্টারসেক্ট করছে, ছেদ করছে দুটো বিন্দুতে ছেদ করছে বলছে, দুটো ডিস্টিংক্ট, দুটো আলাদা আলাদা বিন্দুতে একে অপরকে ছেদ করছে, এরকম নয় সিচুয়েশনটা। একই বিন্দুতে পরস্পরকে স্পর্শ করছে এরকমটা নয়, দুটো বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করছে, মানে এরকম। যদি এরকম হয় তাহলে দুটোর বেশি সাধারণ স্পর্শক ড্র করা যাবে না, ঠিক আছে? যদি একটা বিন্দুতে একে অপরকে স্পর্শ করত তাহলে 3টে স্পর্শক আঁকা যেত। ওকে, সো কারেক্ট আনসার ইজ 2. Okay, having solved this, we just move to our next problem. In the given figure, PT is a tangent to a circle. এখানে তো কোনটার মানটাই বলে দেওয়া হয়ে গেছে, যাই হোক, but still यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था that is the value of the angle, वो यहाँ पे आंसर ही दिया हुआ था, इसलिए हम इसको डार्कन कर दिया. We will just find it out. In the given figure, PT is a tangent to a circle with center O and TPO is 35 degree. What is the measure of x? Where is x? This is basically the x. इसको तुमको find out करना पड़ेगा. This is x. ये जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है ये एंगल x है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? ये जो फिगर है यहाँ पे PT क्या है? टेंजेंट है. क्योंकि ये टेंजेंट है, since this is a tangent, we know this angle is 90 degree, right? This angle is 90 degree. That is angle OTP is equals to 90 degree, and hence the triangle OTP triangle, it is a right angle triangle, जहाँ पे ये एंगल तो स्पेसिफाइड हुआ ही है 35 डिग्री करके, ठीक है? तो therefore angle TOP, or we just write it like this, angle TOP plus angle OTP plus angle TPO is equals to 180 डिग्री. यहाँ पे मेंशन करना है ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल OTP we have, right? So TOP हमको नहीं पता, OTP क्या है? 90 डिग्री. TPO क्या है? 35 डिग्री. This is equals to 180 degree. Angle TOP is equal to 180 degree minus 125 degree. That is angle TOP आ गया हमारा 55 degree. That means ये एंगल हमको मिल गया 55 डिग्री करके. Now we have to find out angle X, मतलब ये वाला. How to find this? Now see, TO, इसका एक नाम दे दो Q. Angle TOQ is what? It is a straight angle. It is a straight angle which is 180 degree. It's a straight angle, right? Now if this is 55, what is the value of X? Value of X will be what? 180 degree minus 55 degree, right? So this is 125 degree. देखो यहाँ पे आंसर वही दिया हुआ था 125 डिग्री, ठीक है?
So we'll have our answer, we'll have our unknown angle x as 125 degree. Right, Devashish, 125 degree is the answer. Very good. Okay. यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए हम बोल देते हैं कि हमारा जो क्लास 10 माध्यमिक बोर्ड से है उनका एडमिशन स्टार्ट हो गया है, लिमिटेड सीट्स है, अभी अपना सीट बुक कर लीजिए। अगर आप लोगों का कोई ऐसा जान पहचान वाले हैं जो कि क्लास 10 में अभी 9 से लेके 10 में अभी प्रमोटेड हुए हैं, उनको प्लीज ये न्यूज शेयर कर दीजिए कि हमारा क्लास 10 का नया बैच अभी स्टार्ट होने ही वाला है, हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। If the diagonals of a quadrilateral divide each other proportionally, then it is a which one? Proportionally मतलब सपोज करो कि this is the quadrilateral we have A, B, C, D, AC और BD, इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, डायगोनल्स, AC एक डायगोनल है और BD दूसरा डायगोनल है। डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली मतलब ये जो डायगोनल्स है ये ईच अदर को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, वी कैन राइट एज AO डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल्स टू BO डिवाइडेड बाय OD। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, क्वाड्रिलैटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, इसका मतलब मैथमेटिकली वी कैन राइट इट लाइक दिस, AO divided by OC is equal to BO divided by OD. Okay? ये हमको दिया हुआ है, दिस इज गिवन। अब देन इट इज अ व्हाट, इन चारों में से कौन सा होगा? ये डायग्राम देख के हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये डायग्राम तो हमने बनाया है। इफ वी डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दिस वी कांट इवन मेक द डायग्राम, राइट? यहां से हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स को ले लेंगे, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। इन दोनों से हमको क्या मिल रहा है देखते हैं। इन दोनों से हमको मिल रहा है, देखिए ये और ये एंगल सेम है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये है ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और क्या है, एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD, ये दोनों इक्वल हो रहा है, और एंगल OBA इज इक्वल्स टू ODC। अब ये दोनों एंगल अगर हम इक्वल बोलेंगे, इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, इसका पोजीशन वाइज अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, these are alternate angles, so is this, क्योंकि ये है ये दोनों एंगल्स। ओके, इनका जो पोजीशन है और इनका जो पोजीशन है, ये दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं, दोज आर इक्वल फ्रॉम द गिवन डायग्राम। सो वी कैन व्हाट वी कैन से कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हमको मिल रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल होना ही चाहिए। मतलब इफ AB is parallel to CD and
either AC is transversal or BD is transversal, तभी जाके ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे एज ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, तो हमको यहाँ पे मिल रहा है कि क्योंकि ये दोनों एंगल्स, ये पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है और अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन हमको समझ में आ रहा है कि ये अल्टरनेट एंगल्स है. इसका मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल है. We can't conclude anything regarding these two sides क्योंकि यहाँ का कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं. We can confirmly say that these two sides are पैरेलल. ओके, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हमको मिल जाए तो उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं. We don't know whether they are parallelogram or rectangular square, that we don't have information to conclude about anything, these three things. Okay, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि इसका वन पेयर ऑफ साइड तो पैरेलल है. ठीक है, तो इसीलिए if one pair of side is parallel then it must be a trapezium. So our answer will be option D. Okay, ম্যাম হঠাৎ চ্যানেলে সিবিএসসি বোর্ডের জিনিস কেন? আমাদের সিবিএসসি বোর্ডের ক্লাস 10 লঞ্চ হয়েছে 1 জানুয়ারি থেকে. তোমরা যদি দেখে থাকো আমাদের লঞ্চিং প্রোগ্রামও হয়েছে. ইয়েস, ইটস এ সারপ্রাইজ. আরো কিছু সারপ্রাইজ আসবে তোমাদের জন্য, আমরা নিয়েই আসতে থাকবো সারপ্রাইজ, কোনো চিন্তা নেই. ওকে, I hope you understand. So let's move on to our next problem. In triangle ABC, DE parallel to BC, if AD is equals to 2, BD equals to 3, BC is equals to 7.5 centimeter, find the length of DE. Okay, here we can have triangle ADE and triangle ABC. From these two triangle, ये छोटा वाला एक है और ये बड़ा वाला एक है. इसमें हमको क्या मिल रहा है? देखो, एंगल ADE is equal to एंगल ABC. हाउ? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ये दो है पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू दिस. अगर ये दोनों पैरेलल हुआ तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे भी सेम एंगल बनेगा, corresponding angle. These two are parallel and this is the transversal. From this we can write these two angles are equal. इसको हम corresponding angles बोलते हैं. These two are equal. Also DAE is equals to BAC, same angle. जो DAE है वही BAC है, so this is the same angle. So we can say that triangle ADE is similar to triangle ABC, right? Triangle ADE is similar to triangle ABC by angle similarity. Mind that this is not, we are talking anything about congruence of the triangles. This is the similarity we are talking about. Don't just get confused with these two. If we have two angles same for two different triangles, we can say these two triangles are similar to each other. I'm not talking about congruence. Don't get confused. So यहाँ पे क्या है? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. अब सिमिलर होने से क्या होता है? क्योंकि हमको पता है कि कॉन्ग्रुएंट होने से सब कुछ इक्वल हो जाता है, सेम काइंड ऑफ एंगल्स इक्वल हो जाता है, सेम काइंड ऑफ साइड्स इक्वल हो जाता है. लेकिन सिमिलर होने से क्या होता है? इक्वल नहीं होता, इसका प्रोपोर्शन सेम होता है. मतलब
I can write AD by AB. AD divided by AB is equals to DE divided by BC. साइड्स के जो प्रोपोर्शन है वो सेम होता है, सिमिलैरिटी में यही होता है, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो उनका जो सेम टाइप का मतलब सेम जो साइड का जो साइड्स होंगे उसका प्रोपोर्शन सारे तीनों साइड्स के लिए सेम होगा, उनका एंगल्स भी वही होगा, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन सेम होता है। तो AD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल्स टू DE डिवाइडेड बाय BC। ओके, नाउ हमको क्या दिया हुआ है, देखो AD इज इक्वल्स टू 2, BD इज इक्वल्स टू 3 और BC इज इक्वल्स टू 7.5, सारे सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, देखो AD तो हमको दिया ही हुआ है, AB I can write as AD plus BD और यहाँ पे DE divided by BC. Now put the values only. AD is equals to 2 plus 3, हमको निकालना है DE, we don't know it, so let's put it as DE only, and BC is equals to 7.5. So कैलकुलेशन हम कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन दिखा देते हैं। 5 into DE is equals to 2 into 7.5, that is 15. Now DE is equals to 15 by 5, that is 3 centimeter. So we have correct option as B. B is our correct option. Okay. I hope everybody understood. Quite simple problems. Let's move on to the next. Given HCF of these two numbers, we have two numbers like this. We have HCF this and LCM is 252 times K. Then the value of K is what? Times मतलब क्या है? This is 252 into K. Now we know a formula, LCM into HCF is equals to product of the numbers. Product of the numbers. Here we have LCM is 252 into K. HCF is 40 and we know the numbers, it is already given. 2520 into 6600. We'll have to find out the value of K. So the K will be 2520 6600 divided by 252 into 40 is 10 and this is 1 6 5 and K is 1650. 1650. I hope there is no mistake in my calculation. My recommendation will be always put a pen and paper or a copy with you whenever you start watching any live, any class, not only mathematics or of any subject. कोई भी subject का class करो, specially mathematics के लिए ही मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब भी कोई class करो, कोई live class देखो या फिर कहीं पे भी मैथ्स का क्लास अगर करोगे तो कीप अ पेन एंड कॉपी विथ यू
जो भी कैलकुलेशंस यहाँ पे बोर्ड में होगा वो खुद से करो एक बार। हो सकता है कि बोर्ड में करने पर कोई भी गलती आ जाए, कोई मिस्टेक्स हो जाए, हो सकता है ऐसे, क्योंकि बहुत सारे सम एक के बाद एक कर रहे हैं, तो कभी कभार भूल हो सकता है। यू जस्ट कीप योरसेल्फ अपडेटेड, यू जस्ट कीप योरसेल्फ करेक्ट, राइट। अगर ऐसा कभी होता है कि तुम्हारा कैलकुलेशन के साथ मेरा कैलकुलेशन मिल नहीं रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहा है, जस्ट पुट अ कमेंट ओवर देयर, आई विल जस्ट गो एंड चेक अगेन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही इजी सम था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये तो बहुत मतलब बहुत दिनों से हम कर रहे हैं, यहाँ पे सभी कुछ दिया हुआ था, ओनली द वैल्यू ऑफ के वी हैड टू फाइंड आउट, वो ऐसे हम करेंगे। ओके, जो भी माध्यमिक स्टूडेंट्स है उनके लिए ये बोलना चाहते हैं कि एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है हमारा, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस है, जिनके लिए क्योंकि यहाँ पे 11-12 में जो सेम 1 और सेम 3 है, या फिर माध्यमिक में जो एमसीक्यूज का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप लोगों के लिए भी एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सब एमसीक्यूज ही हम कर रहे हैं। इनका जितने सारे पेपर्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितने सारे सब्जेक्ट्स जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका परफेक्शन उतना ही आता जाएगा। क्या मतलब, क्या व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज इज जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, आपका गलती का जो रेट है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, कम गलती करने लगोगे। ठीक है, सो हमारा स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है अभी, 7 पेपर्स यू विल गेट ओनली एट ₹500। So if you want it, if you need it, please go and contact us. Our contact details is always at our screen. Okay, right. Moving on to the next. A pair of irrational numbers whose product is a rational number is. ऐसे कौन से दो इरेशनल नंबर्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है जिनका प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर बनेगा, जिनका प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर बनेगा। ओके, रैशनल नंबर्स मतलब जो नंबर्स रूट के अंदर होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स, जहां से तुम ये रूट ओवर साइन को रिमूव ना कर पाओ, दैट इज द इरेशनल नंबर। और जो भी नंबर रूट नहीं होता है जिन नंबर्स में, वो होता है रैशनल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे वी आर गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स इन विच वी विल गेट, इसका प्रोडक्ट जो है उसको रैशनल होना चाहिए। जैसे कि हम पहले से स्टार्ट करते हैं, रूट ओवर 16, रूट ओवर 4। अब रूट ओवर 16 इज इक्वल्स टू क्या है? 4 है। रूट ओवर 4 इज इक्वल्स टू 2 है, इज इक्वल्स टू 8। देखो, ये जो रूट ओवर 16 है और रूट ओवर 4 है, ये दोनों ही रैशनल नहीं है, आई मीन इरेशनल नहीं है, ये दोनों ही रैशनल नंबर ही है, क्योंकि रूट ओवर 16 इज इक्वल्स टू 4 एंड रूट ओवर 4 इज इक्वल्स टू 2, सो नो लॉन्गर दैट रूट साइन एग्जिस्ट, राइट। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही इरेशनल नंबर है ही नहीं। अब दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट तो रैशनली होगा, दैट इज तो ऑब्वियस। सो ये ऑप्शन हमारा पहले ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इज अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स, व्हिच वन इज द पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स। हमको इरेशनल नंबर्स के ही पेयर्स को ढूंढना है। यहाँ पे ये दोनों नंबर्स ही ऑलरेडी रैशनल है, तो ये तो पहले ही आउट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट कम टू रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर 2, रूट ओवर 10। ये रूट को हम कैसे भी रिमूव नहीं कर सकते, सो दिस ऑप्शन अगेन एक्सक्लूड्स। कमिंग टू दिस इज रूट ओवर 36 इंटू रूट ओवर 2। इसमें क्या है?
6 root 2. Now you cannot remove this root over sign from this 2, right? So this is again a irrational number. Again you are excluded from this option. Now root over 3, root over 27. Now what happens? Root over 3 को तो हम ऐसे ही रख देते हैं. Root over 27 means what? 3 into 3 into 3. Root over 3. This is 3 root 3, right? Now what we have? 3 into root 3 into root 3 हो जाएगा 3. So this is 9. So यहाँ पे हमारा हर एक जो यहाँ पे conditions है सारे satisfied होते हैं. देखो, this is root 3. You cannot remove this root over sign. So it is an irrational number. This is 3 root 3. It is again an irrational number. और इन दोनों का जो product है वो आ गया देखो a number without any root over sign. So this is a rational number only. Okay. So the pair which we are getting, the pair of irrational numbers, this is important. The pair of irrational numbers whose product is a rational number is the option C. Okay, so we are almost done with our time. We'll just go and do our last sum for today. This one, and then we will continue from our next class. Okay, if a digit is chosen at random from the digits 1 to 9, then the probability that this digit is an odd prime number. Fine. Odd prime number. So what are the numbers which are given over here, among which are odd prime numbers? 1 to 9 के अंदर odd prime numbers कौन-कौन से हैं? Odd मतलब 2 तो नहीं लेंगे, 1 तो नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो प्राइम ही नहीं है, 2 तो odd नहीं है, फिर हम 3 से लेंगे, 3, 5, 7 odd and prime. ये तीनों ही है हमारा odd and prime numbers, right? ये तीनों numbers है हमारा odd prime numbers. So number of favorable events we have 3. What are the total number of events? 9. 1 to 9. Total 9 digits are there. So what is the probability that digit is odd prime? What is the probability? That is 3 by 9. 1 by 3. So we have option A as our correct option. Right? I hope you understood. Up to this, we really don't have time today, no more time. So we are about to complete our live class today. We will continue from here in our next class. You will get your schedule. I will look forward to your active participation. जल्दी से join कर जाना. Next class कब है live का वो आपको schedule मिल जाएगा. जरूर join हो जाना. And I want an interactive session with you. I hope you did not have any problem in understanding. Still, if you have, just reach out to us. We are always there to help you out. So till then, we will come with another live. Till then, I wish you all a good health and take good preparation. Thank you so much.